बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद नाज़रीन। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन अख्तर और बर्मिंघम पब्लिक हेल्थ की तरफ से पेश कर रही हूँ आपके लिए हेल्थ मैटर्स का प्रोग्राम। जैसे कि आप जानते हैं हम एवरी वीक आपके लिए एक मुख्तलिफ टॉपिक लेके आते हैं आपकी सेहत के बारे में। और आज की टॉपिक है प्रेगनेंसी आउटरीच वर्कर्स, यानी कि अगर आप एक एक्सपेक्टेंट मदर हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये सर्विस आपको किस तरह मदद कर सकती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो गेस्ट गेटवे फैमिली सर्विसेज से जस्टीन एनिस और सोफिया शरीफ। Welcome to the program, Justine. Thank you. Welcome to the program, Sophia. Thank you. Justine, can you start off by telling me a bit about your role? Well, I'm the programme manager, so it's my job to manage the 23 outreach workers that we've got, promote the service, attend multi-agency meetings, we attend events, but really it's to make sure that the quality of the support that we're giving is the best that it can be. And Sophia, आप बता सकते हैं कि आप अपने रोल में क्या करती हो? मैं प्रेगनेंसी आउटरीच वर्कर हूँ, जो उनसे रेफरल हमें आते हैं मिडवाइफ के थ्रू, तो फिर हम उनको जाके घरों में देखती हैं या क्लिनिक्स में। Okay. And Justine, pregnancy outreach service. Yes. Is it a new service? Can you tell us a bit about what this service is about? No, we're not new at all. We've been around since 2007. The service was commissioned because at that time 1 in 8 babies were dying before their first birthday, and it's generally for stress related emotional and social issues. So the service was commissioned to work alongside the midwives to provide that social and emotional support that midwives don't have the time to do. Okay. सोफिया, ये जो जस्टीन बता रही है कि ये सर्विस इस वजह से कमीशन हुई है क्योंकि बहुत से बच्चे अपनी पहली बर्थडे से पहले मर रहे थे। हाँ जी, तो ये चाहते थे कि हम इन एरियाज में काम करें, सो हम मदद कर सकें मदर्स की, सो उनकी हेल्थी प्रेगनेंसी हो सके। प्रेगनेंसी के दौरान तो फिर जो बेबी पैदा हो जाता तो फिर 8 वीक्स बेबी के पैदा होने के बाद भी हम उनके घर जा सकती हैं उनको हेल्प करने के लिए। Justine, it's quite a worrying statistic that 1 in 8 children weren't reaching their first birthday. Is there any reason for that? There's lots of reasons for that. One of the big reasons is that there's a large transient population in Birmingham, so sometimes we get women coming to Birmingham who are newly arrived into the country, have not had any maternity services whatsoever, and are turning up at the hospital in labour. They've been known to actually turn up for their first antenatal support when they're actually in labour. So our service is about supporting people to access antenatal services as early on as possible, so that if there are any congenital abnormalities they can be dealt with from very early on. If women are smoking or using alcohol or drugs, we can support them to stop that. So there's lots of different reasons, but one of the big reasons is people not engaging with maternity services as early as they possibly can. सोफिया, ये जो आपकी गेटवे सर्विसेज है ये कहाँ पर है? यहाँ बर्मिंघम में है? जी, हम हैगली रोड के पास है, उसके पास ही है। तो वो आपका हेडक्वार्टर्स है? हाँ जी, उधर हम सारे बेस्ट हैं, लेकिन जो उनसे रेफरल्स आते हैं वो मिडवाइफ के थ्रू आते हैं। मिडवाइफ कर सकते हैं, सोशल वर्कर्स कर सकते हैं, जो भी जिनको भी है कि प्रेग्नेंट औरतों के पास आते हैं तो उनको चाहिए कि उनको ज़्यादा मदद ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान, and then they come to us, they get referred to the pregnancy outreach worker service. And Justine, can you tell me a bit about the services that a pregnancy outreach worker provides? We provide all kinds of support. It can be low-level housing, somebody needs a letter to housing, right up to, we've actually had a client who was resident at the Barbary Centre, so had high-level mental health needs, but we were still going in and offering her some emotional support. Immigration, domestic abuse, you name it, we've supported somebody with it. Okay, so I mean, a lot of our viewers will be listening and they'll be thinking in terms of pregnancy, it's to do with health. But some of the advice and guidance you're providing is around immigration and housing? Yeah, because it's stressful, and stress is a big factor in infant mortality. So if we can take some of those stresses away from that woman, so, you know, direct signpost her to the agency that's there to support her in the community. Some women don't know where to go for anything, especially newly arrived women. So really it's supporting them to navigate the system. So it's not a health matter, but it's definitely a stress situation that will affect their emotional.
It's anything that can impact on the unborn babies that we deal with. It could, as Justine said, it could be anything. सोफिया, जस्टीन ने ये लफ्ज़ यूज़ किया इन्फेंट मोर्टालिटी के, आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें समझा सकते हैं कि इन्फेंट मोर्टालिटी का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बच्चे के 1 साल होने से पहले उनकी फौतगी हो सकती है, या तो 1 साल से पहले या माँ के पेट के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर उनका खाना पीना नहीं सही है, उनका रहना घर नहीं सही है, डैम्प हो सकता घर में, अगर उनको सही एंटीनेटल केयर नहीं मिल रही है प्रेगनेंसी के दौरान, ऐसी फिर चीज़ें हो सकती हैं। Being pregnant in a woman's life is very, very important, and it can be quite stressful, especially maybe if it's your first child. Yes. Your service, is it just for pregnant women when they are pregnant, or is it if you're planning to become pregnant as well? Can you tell me a bit about that, Justine? No, the criteria is that the woman is pregnant, and we work with those women up to 8 weeks postnatally. But Gateway as an organisation do also provide sexual health, so we can look at preventative measures, especially with the younger 16 to 25-year-olds. You know, we give them condoms and so on, but yeah, it's mainly for, well, it is for pregnant women. It is for pregnant, okay. Sophia, आप कब शुरू करते हो एक अगर माँ बनने वाली है कोई फीमेल, उसके साथ कब शुरू करते हो काम करने? जब भी उनका रेफरल आए, अगर मिडवाइफ के पास जाएं जल्दी देखने के लिए, या जीपी के पास जाएं जल्दी, जैसे कि कोई हो सकता है कि वो अपनी जीपी को जब भी उनकी अपॉइंटमेंट हो तो फिर वो जा सकती है। 5 वीक प्रेग्नेंट हो, जब भी वो जाएंगी उनका रेफरल आएगा गेटवे फैमिली सर्विसेज पे, फिर हम उनको देख सकते तब से। Okay. सोफिया, बहुत सी फीमेल्स कभी कभी ये सुना है कि सोचती हैं जब वो नई प्रेग्नेंट हो तो स्ट्रेट अवे जीपी के पास नहीं जाते, सोचते हैं कि चलो फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट 3 मंथ्स ओवर हो जाए तो फिर जीपी के पास जाते हैं। आपका इसके बारे में कोई गाइडेंस है कि उनको कितनी जल्दी जाना चाहिए? हम यही कहते हैं कि जल्द से जल्द जाएं। सो अगर उनको किसी हेल्प की ज़रूरत हो प्रेगनेंसी के दौरान, जितना जल्दी वो जाएं उतनी जल्दी फिर उनको वो हेल्प चाहिए हो सकती है। अगर हेल्थी ईटिंग के बारे में उनको पता होना चाहिए, अगर कोई और सोशल उनके कोई भी हो सकता है प्रॉब्लम, वो फिर जितना जल्दी जाएंगी अपनी मिडवाइफ को देखने, जीपी को देखने, वो फिर हमें रेफर हो सकता है हमें। So that's an important point, that as soon as you find out you're pregnant, you must try and make an appointment with the GP so you can be supported appropriately. आपको सही तरह support मिल सके. Definitely. We also run groups as well, so the quicker they get referred to the service, we do run pregnancy groups as well, so then they can come to us and we can go through certain things with them. We cover healthy eating during pregnancy, how to bath baby, how to top and tail, breastfeeding, how to sterilize bottles, how to make up feed. So it's all these things we cover, and soon as they get referred to the service we can start getting them to come to these groups. Justine, earlier on in the programme you said you were based on Hagley Road. Yes. Does that mean that everybody across Birmingham needs to travel to Hagley Road to see you? Not at all. We go out and see the women where they're most comfortable. So if it's in their home, we'll go and visit them in their home, a children's centre, a local cafe, wherever they feel that they would like to receive their support. They can come to our offices because we've got meeting rooms, but they don't have to. Okay, ये एक बहुत अच्छा है कि लेडीज़ को ट्रैवल नहीं करना पड़ता इधर हैगली रोड में आने के लिए, कि कई बार ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होती है, बसेस की प्रॉब्लम होती है, या कोई ड्राइव नहीं करता, फिर आप उनके घर में भी जाके उनको सी करते हैं। हम उनके घर पे भी जा सकते हैं। अगर उनके लिए घर पे मिलना सही नहीं है, कोई लेडीज़ को पसंद नहीं है, अगर वो एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहती हैं, अगर उनके लिए सही नहीं है घर पे मिलना, तो फिर हम चिल्ड्रन सेंटर्स पे जहाँ भी उनके लिए अगर कैफ़े पे मिलना सही है, जो भी उनके लिए सही है, हम उनकी मुताबिक चलते हैं जो उनके लिए सही हो। And Justine, in terms of Birmingham, it's a huge city with a lot of women getting pregnant. Do you support every single woman here in Birmingham? Unfortunately, no. We used to work in a much larger area. It's been reduced now. So we do have certain areas, and they're the areas of the highest deprivation. If you're a teenager who was pregnant at the age of 19, we work in Harborne, Kingstanding, Ladywood, Longbridge, Oscott, Quinton, Shard End and Tyburn. And for all other women in Moseley and Kings Heath,
Bordsley Green, Washwood Heath, Springfield and Sparkbrook, Lozells and East Handsworth, Soho, Nechells and Aston, we take any age of woman. The criteria is that they're pregnant. And why is it that you've got a 19 to 25-year-old criteria? Because there's been a high level of teenage pregnancy in Birmingham, in Europe in general, and the UK is very high. And it was really just to target those high teenage pregnancy areas and give the support to those young women, support them to stay in education if that's what needed. A lot of them have got this idea about they want to move out, they're pregnant and they want their own home, but we won't support them with that if we don't think it's the best thing for them. Those young parents, we try and advise them to stay at home with mum and dad if mum and dad are happy for that and it's a good place for them to be. Obviously, if the relationship has broken down, then we will support them to live in supported accommodation. But सोफिया, ये जो जस्टीन ने हमें इन एरियाज़ के बारे में बताया है कि जो स्पार्कब्रोक के एरिया है और से भी एरिया नाम लिए इन्होंने, इन एरियो में सिर्फ आप क्यों विमेंस को सपोर्ट करते हैं, विमेन ऑफ ऑल एजेस को? हमने ये जो सा रिसर्च हुआ कि इन एरियाज में ज़्यादा था जो सा बच्चों की फोत की ज़्यादा थी। अच्छा, इन्फर्मोर्टेलिटी जो आपने पहले कहा उसके रेट हाई था। हाँ जी, इन एरियाज में, इसीलिए हमें इन एरियाज में बुलाया गया था। अब 7 साल हो गए हम इन एरियाज में काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा चल रहा है अब तक तो। Can you tell me a typical day of a pregnancy outreach worker? क्या होता है? Every day वो क्या करते हैं? To both of you. पहले तो हम ऑफिस में आते हैं, देखते हैं कि कौन से अगर नए कोई रेफरल्स आए हैं, देखते हैं कि क्या है। फिर हम मिडवाइफ्स को फ़ोन करते हैं, रेफरल जब आ जाता है मिडवाइफ को बताने के लिए कि ये रेफरल आया है, हम ये लेडीज़ को देखने जा रहे हैं, तो सही है, सेफ़ है उनके घर में जाने के लिए। तो फिर अगर वो कह दें कि किसी के रेफरल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो उनसे मिडवाइफ कहती हैं तुम लोग अकेले नहीं जा सकते इन घरों में, बिकॉज किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से इन घरों में अकेले नहीं जा सकते। फिर हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को फ़ोन करेंगी, जो उनके लिए कन्वीनियंट टाइम है उनके लिए फिर अपॉइंटमेंट्स बनाएंगी, जाके फिर हम घर पे जाएंगे, फिर उनके साथ बातचीत करेंगी क्या प्रॉब्लम्स है, सोशल, इमोशनल, जो भी कोई उनकी प्रॉब्लम्स है उनको देखती हैं, उनको फिर बताती हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कंसेंट फॉर्म्स फिल करते हैं, उनको बताते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में सब कुछ ये बताती हैं। फिर हम ग्रुप्स भी करती हैं, जैसे मैंने कहा था पहले कि चिल्ड्रन सेंटर्स में प्रेगनेंसी ग्रुप्स भी रन करती हैं। तो इसका क्या मतलब कि बहुत सारी वुमेन जो एक्सपेक्टेंट है वो इकट्ठी होती हैं? हाँ जी, वो आ सकती हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर सकती हैं, कॉफ़ी मॉर्निंग्स भी करते हैं। तो जो जैसे कि मैंने कहा था कि डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात भी करते हैं, बेबी को बात कैसे करवाते हैं, top and tail, how to breastfeed, how to make up feeds, sterilizing, healthy eating during pregnancy. There's all these things that we cover, so the mums are more than welcome to come to the children's centres, and we just discuss any social issues that they have. Justine, you mentioned 23 pregnancy outreach workers for Birmingham City. Yeah. It doesn't seem that many now, that in terms of in light of how many women are getting pregnant, but then of course you've got your different areas. Yes. One pregnancy outreach worker, what is their typical caseload like? They could have up to 20 women, sometimes more, depending on the number of hours that they're working. That 23 members of staff is made up of both full-time and part-time staff members. So depending on the number of hours that they're working, that will dictate their caseload. Also, the level of need of the women. Some people might have only 10 women, but each of those 10 women has got a lot of needs and it's quite complex, so they spend a lot of time supporting them. There's no sort of limit, but I'd say 20 is about average. सोफिया, जब आप जाते हैं इन लेडीज़ को मिलने के लिए जो माँ बनने वाली हैं, आपने कहा कि ये सब सपोर्ट हम देते हैं, उनके साथ वहाँ पर बैठ के बातचीत करते हैं, आप एवरी डे जाते हो, वंस इन अ वीक जाते हो, या इसका क्या हिसाब किताब है? हम अपने लेडीज़ के ऊपर छोड़ देती हैं, अगर वो चाहती हैं कि हम एवरी वीक आए तो फिर हम एवरी वीक आते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका कितना उनके
सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर वो नहीं चाहती कि इतना उनको चाहिए तो फिर हम फ़ोन कॉल्स भी करते हैं पूछने के लिए, एवरी वीक फ़ोन कॉल्स भी करती हैं पूछने के लिए कि अगर वो ठीक है, कि सब कुछ सही जा रहा है प्रेगनेंसी के साथ, अगर वो मिडवाइफ के पास गई हैं, मिडवाइफ की अपॉइंटमेंट्स को अटेंड करें। हम लेडीज़ को कभी छोड़ती नहीं है। अगर वो चाहती हैं कि वो होम विजिट ना लें, लेकिन फिर भी हम फ़ोन करके उनका पता करती रहती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो कितनी देर तक आप मदद करते हो बाद में, अगर बेबी हो गया तो कितनी देर बाद आप मदद करते रहते हो? प्रेगनेंसी के पूरे दौरान मदद करते तो फिर 8 वीक्स पोस्ट नाइटली, 8 वीक्स के बाद जब तक बेबी 8 वीक्स का होता है। ओके, सो 9 मंथ्स पहले करते हो जबकि बच्चा पेट में होता है? हाँ जी। तो उसके बाद आप 8 हफ्ते करते हो? जी, जब भी उनका रिफरल आया हो, अगर बिगिनिंग पे आया हो, शुरू पे प्रेगनेंसी के या मिडल में, जब भी उनका रिफरल आया तो फिर पूरा टाइम हम देखती, तो फिर जब तक बेबी 8 वीक्स का होता है, तो फिर 8 वीक्स के दौरान हम ब्रेस्ट फीडिंग का हेल्प करते हैं, स्टेरिलाइजिंग का, बॉटल फीडिंग का, ये चीज़ों का। हाँ जी, लेकिन हमारा फोकस पूरा होता है कि सारी जो सी मम्स हमें देखती कि वो ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ब्रेस्ट इज बेस्ट। हाँ जी। ओके, सफिया, हमारे बहुत से व्यूअर्स शायद ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और मे बी वो बर्मिंघम में नहीं रहते। ये कोई नेशनल सर्विस है कि सिर्फ बर्मिंघम में है? नहीं, अभी तक तो सिर्फ बर्मिंघम में शुरू की है, तो फिर ये देख रहे थे कि आगे भी हो, तो अभी पता कर रहे थे कि आगे भी इन्होंने करना है, लेकिन अभी तक तो सिर्फ इधर ही है। इधर बर्मिंघम में है। Okay, so that's an important point to remember for any viewers that are watching outside of Birmingham. This is a Birmingham Pacific service. Yeah. Justine, can you tell me a little bit about the background of the pregnancy outreach workers? Are they health specialists, or what kind of skills and backgrounds do they come from? We've got people that have done some midwifery training but didn't necessarily complete. We've got people who have been support workers in other fields. We don't have necessarily health professionals, but we do have people who've done little bits of health here and there. But what we did really was take the people from the communities that we were providing the service in, so that they knew what these women, the kind of barriers that women face in their local community, and they can relate to them. So it wasn't necessarily a health background that you needed. You just needed to have some compassion and a bit of experience in supporting people. And in terms of language, etc.? We do have a high language need. We're getting lots of referrals for newly arrived women, but a lot of the POWs, as we call them, pregnancy outreach workers, have got a language skill as well. So depending on where the need is, when we advertise a job, we will say, if you've got a second language, that would be good as well. But we also are using interpreters if needs be. सफिया, आपने बताया जिस तरह एक टिपिकल डे ऑफ अ प्रेगनेंसी आउटरीच वर्कर, और उसमें तो आपने बहुत सी चीज़ें बताई कि आप हेल्प कर सकती हो इमिग्रेशन के मैटर में, हाउसिंग के मैटर में, अगर बच्चे को कैसे नहलाते हैं, बच्चे को कैसे फीड करते हैं. सो से फॉर एग्जांपल एक किसी का इमिग्रेशन मैटर हो गया, तो हाउ डू यू एक्चुअली प्रैक्टिकली हेल्प? आप क्या सोलिसिटर्स के अपॉइंटमेंट पे जाते हैं कि फॉर्म क्या वो किस तरह आप हेल्प जितना हम कर सकते हम करते हैं. अगर उनके कोई फॉर्म फिल करने हम मदद करते फॉर्म फिल करने की, लेकिन हम इमिग्रेशन के ट्रेंड नहीं है, हम ज़्यादा प्रेगनेंसी के फोकस करते हैं. सो अगर ऐसे कुछ है फिर हम उनके लिए सोलिसिटर के साथ अपॉइंटमेंट बना देते हैं. तो फिर अगर वो चाहते हैं कि हम उनके साथ जाएं अपॉइंटमेंट पे तो हम लेके जा सकती हैं या उनको वहाँ मिल सकती हैं. तो फिर हम ऐसे करते हैं कि उनके लिए जो भी सही है इमिग्रेशन को एडवाइस दे सकता, फिर उनके साथ उनकी अपॉइंटमेंट बना देते हैं. Justine, one of the key things that's coming out of this discussion is that in terms of health, a lot of other factors have an impact on it. Yes. And I think that's the important point that you're trying to make, is that if you're pregnant, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उनको कोई भी और परेशानी है तो उनकी वजह से उनके बच्चे को नुकसान हो सकता है. ज़रूर. हाँ, हम ये इसी का है कि सिर्फ प्रेगनेंसी का नहीं है कि बच्चा पेट में डेवलप हो रहा है. जो सा सब कुछ उसके साथ है, जो सा इन्वायरमेंट सब कुछ उसके साथ है, सोशल नीड्स एज वेल, सारा कुछ बेबी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा. So Justine, if we've got viewers out there that are listening to this program, yes, and they want to get in touch, yep, they can do.
Yes, you can call the number that should be running across the bottom of the screen. You can speak to your midwife and ask her to make a referral into the service if you live in one of the areas that we mentioned before. You can call in yourself, as I've said. You can go on our website, download the referral form and complete it. There's lots of different routes, or you can make contact with one of the pregnancy outreach workers who's out there in antenatal clinics and speak to them. सफिया, जब प्रेग्नेंट वुमन जीपी को जाती है तो वो जीपी या मिडवाइफ खुद ही उनको रिफर कर देता है कि उनको वहां जाके कहना पड़ेगा? नहीं, जोन से इन एरियाज में जोन सा हमने नाम लिया था, सारी मिडवाइफ्स को पता है कि हम यहाँ काम करती है, हम सब गई हुई है, हमने अपने इंट्रोड्यूस किया हुआ है प्रेगनेंसी आउटरीच वर्कर की सर्विस को, तो वो सब जानती है हमें, सो वो खुद ही कर देती हैं रिफर सर्विस पे. Justine, a lot of our women that will be watching will also be worried about confidentiality. This is a highly confidential service. We share no information. The only information that we would share is if we've got a safeguarding concern, and the pregnancy outreach workers will tell the women from the off. If you mention anything to us that is a safeguarding concern, we will have to break that confidentiality, but that's the only time. सोफिया, सेफ गार्डिंग का क्या ये मतलब है? अगर उनके होने वाले बच्चे को खतरा हो या अगर उनके पहले से कोई बच्चे हो, अगर उनके होने वाले बच्चे पे या उन पे खुद पे प्रेगनेंसी के दौरान पे कोई हो कि कुछ बच्चे को हार्म हो सकता है, तो फिर इसी वजह से फिर हम कॉन्फिडेंशियलिटी का फॉर्म उनसे फिल करवाते हैं, कहने के लिए कि सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन हमें अगर लगे कि कुछ हमें नजर आया है कि जब हम आती हैं घर पे या उनको या उन्होंने हमें कुछ कह दिया, तो फिर हमें अपने मैनेजर के साथ बात करनी पड़ेगी. But that shouldn't put anybody off getting in touch with the service. No, not at all. And if we have got a safeguarding concern, it is a genuine concern. We're not just calling social services to report women willy-nilly. And we will work with that woman and say, we'd let her know. We would never make a referral to social services without a woman knowing. But please, yes, still send in your referrals, because we can support you. Even if social services are involved, we work very closely with social services. And what about if you're speaking to the female, but maybe how confidential is it kept from the husband and the extended family? As much as she wants it. It's entirely up to her what she shares. We wouldn't be sharing anything with anybody else. It's up to the woman herself. अच्छा सोफिया, जो आपकी डिस्कशन होती है वो सिर्फ वो एक्सपेक्टेंट मदर के साथ होती है, आप बाकी के फैमिली के साथ मीट नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, आप सिर्फ उनको प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट? हम उनको सिर्फ प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, लेकिन अगर वो चाहती हैं कि उनकी फैमिली भी बैठे अपॉइंटमेंट में, तो वो कर सकती है, वो उनकी चॉइस है. लेकिन ये अपॉइंटमेंट सिर्फ माँ के लिए होती, जैसे कि अगर मैं किसी को दिखा रही हूँ कि बेबी को बाथ कैसे करवाते हैं, अगर वो चाहती कि मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ बैठे तो वो भी देखे ऐसे, या स्टेरिलाइज करने के लिए बॉटल्स को कि हस्बैंड भी आके बैठ के देखे, तो ये उसकी चॉइस है. हमें इसके साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन सब कुछ माँ की चॉइस के साथ होता है. अगर वो चाहे कि उसने अपॉइंटमेंट घर पे नहीं लेनी है बिकॉज हस्बैंड हो या एक्सटेंडेड फैमिली हो घर में, तो फिर हम कहाँ हो जो सही उसके लिए लगे चिल्ड्रन सेंटर पे उधर भी मिल सकती हैं. Justine, yes. In terms of the pregnant women, once they get in touch with the service, if they choose to if they think, well, actually this service isn't for me, they're not committed to anything, are they? No, it's entirely voluntary. Even if they've been referred by their midwife, when we get in touch they say, actually I don't want it, then that's fine. It's entirely up to them. नाज़रीन, अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया है. ब्रेक के बाद हम मिलते हैं.